ઉત્તર પ્રદેશના મિર્ઝાપુર જિલ્લામાં ગંગા નદીનું પાણી જે રીતે ઝડપથી વધી રહ્યું છે તે જોતા સદર તહેસીલ અને ચુનાર તહેસીલના કેટલાક વિસ્તારો પૂરથી પ્રભાવિત છે। 2 ડઝનથી વધુ ગામો પૂરના પાણીથી પ્રભાવિત છે। એટલું જ નહીં, એક તરફ ગંગા નદીના પાણીએ પૂર જેવી સ્થિતિ બનાવી છે તો બીજી તરફ વરસાદ પડી રહ્યો છે। જ્યાં પૂરનું પાણી છે ત્યાં લોકો મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે તો વળી ખોરાક, પાણી અને પ્રાણીઓ માટે ચારાની સમસ્યા ઉદ્ભવી છે। ચુનાર તાલુકામાં ચુનાર નગરપાલિકાના કિનારે પાણી ભરાઈ ગયું છે। લોકોના ઘર પાણીમાં ડૂબી ગયા છે। પેટ્રોલ પંપ પાસે પણ પાણી પહોંચી ગયું છે। લોકો પોતાના સામાન બહાર કાઢીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ખસેડી રહ્યા છે। चारों तरफ बाढ़ है, हम लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। यह कोई मतलब कि प्रशासन द्वारा भी मैंने कोई चीज हम लोगों को मिल नहीं रहा है, कोई सुविधा ही नहीं है। डूब गया है मेरा घर 3-4 डूब गया है पूरा। खाने दाने भी नहीं है। यहाँ हम लोग बाल बच्चा दूसरे बच्चा लेके आदमी लेके सब परेशान है। बाढ़ से हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। डेंजर लेवल से इस समय गंगा पार कर चुकी है और इसमें बजाडीहा एक गांव है और जिस गांव पे खड़े हैं यहाँ से लगभग 1 दर्जन गांव का ये संपर्क मार्ग है। और जहां पर ये देखिए खेत होते थे, जहां पे मकान होते थे, वहां सिर्फ चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। वो देखिए सामने मेरे आपको दिख रहा होगा, वो मकान है जहां लोग रहते थे। कई दर्जन यहाँ पे एक मकान है जो सिर्फ अब आपको लग रहा होगा ये पानी ही पानी हो रहा है। और दूसरी तरफ ये जो रास्ते पे, जिस रास्ते पे हम खड़े हैं, यहाँ से लगभग आपको 1 दर्जन जो अलग अलग गांव है वो संपर्क मार्ग है। यही वो रास्ता है जहां से जाने को होता था। ये बाढ़ के पानी पे खड़े होके मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई चारा नहीं है और इंतजार कर रहे हैं काश ये पानी घटे तो हम लोग फिर अपने घर की ओर पहुंचे। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए थे वो अभी तक हम लोग के पास नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद है कि प्रशासन हम लोगों की सुनेगा और ये बाढ़ से जो पानी से हम लोग प्रभावित हुए हैं उनको राशन, पानी या मवेशियों के चारा जरूर पहुंचाएगा। सुमित गर्ग, न्यूज़ 18 मिर्जापुर। ઉત્તર પ્રદેશના સંભલમાં ગંગામાં પૂરના કારણે તબાહી મચી ગઈ છે। ગંગામાં પાણીનું સ્તર વધ્યું છે। રાજઘાટ ગંગા બ્રિજ ગેજ પર પાણીનું સ્તર લગભગ 1 ફૂટ વધ્યું છે। ગંગાનું પાણીનું સ્તર ઘાટ પરના મંદિરો સુધી પહોંચી ગયું છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં ગંગા પાણીનું સ્તર 3000 ક્યુસેક વધ્યું છે। નરોરા બેરેજ પર 80,447 ક્યુસેક પાણી નોંધાયું છે। છેલ્લા 24 કલાકમાં પાણીનું સ્તર લગભગ 3000 ક્યુસેક વધ્યું છે। ઘાટ પર રહેતા લોકોના જણાવ્યા મુજબ ગંગામાં પાણીનું સ્તર વધી રહ્યું છે। દુકાનદારોએ પોતાના ગાડા પાછળ ધકેલી દીધા છે। પુલ પાસે પાણીનું સ્તર 3 થી 4 ફૂટ વધ્યું છે। ગંગામાં આવેલા પૂરના કારણે ગંગા નજીકના ગામડાઓ અને વસાહતો પર પૂરનો ભય છે। ઉત્તર પ્રદેશના ગાઝીપુરમાં ગંગા નદીનું અતિ રૌદ્ર સ્વરૂપ સામે આવ્યું છે। ગંગા નદીએ ખતરાનું નિશાન પાર કરી દેતા અનેક વિસ્તાર જળમગ્ન થઈ ગયા છે। ગાઝીપુર વિસ્તારમાં 57 જેટલા ગામ પૂરના પ્રકોપથી પ્રભાવિત થયા છે। સ્થળાંતર કરાયેલા લોકો માટે શેલ્ટર હોમ તૈયાર કરાયા છે। પૂર પ્રભાવિત વિસ્તારમાં ફૂડ પેકેટ્સનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યારે ન્યૂઝ 18ની ટીમ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચી ગઈ છે। 57 गांव हमारे पूरे जनपद में 5 तहसीलों में इफेक्ट हुए हैं और उसमें लगभग 24 गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी प्रभावित हुई है किसी न किसी कारणवश। और बाकी सब जगह लंच पैकेट्स और सब जगह राहत किट का वितरण शुरू कर दिया गया है। गाजीपुर में गंगा का रौद्र रूप दिखाई पड़ रहा है। गंगा में आई बाढ़ के चलते धीरे धीरे हालात बिगड़ रहे हैं। गाजीपुर में वर्तमान समय में गंगा का जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 1 मीटर से ज्यादा ऊपर गंगा बह रही है। गाजीपुर में खतरे का निशान 63.105 मीटर पर है, जबकि इस समय गंगा का जो जलस्तर है वो 64.400 मीटर पर बह रहा है। इस समय हम गाजीपुर के रेवतीपुर इलाके में खड़े हैं जहां पर आप बाढ़ के हालात देख सकते हैं। कई गांव ऐसे हैं जो डूब चुके हैं। ये लोगों के मकान हैं जो पानी से पूरी तरह घिरे हुए हैं। पानी में ये मकान डूब गए हैं और यहाँ रहने वाले लोग राहत शिविरों में चले गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या किसानों की है जिनकी हजारों बीघा जमीनें जलमग्न
हो गई हैं, उनकी फसलें डूब गई हैं और पशुपालकों के लिए पशुओं के चारे का संकट खड़ा है। तटीय इलाके के में रहने वाले लोगों का जीना जो है वो लगातार